question number 4, which is a model for the height h of a certain type of tree at time t years after being planted assumes that while the tree is growing, the rate of increase of height is proportional to this. Rate of increase of height is proportional to this. So we will start with rate of increase of height. ये क्या चीज है? dh/dt. हाँ, ठीक है. So dh/dt is proportional, means directly proportional to 9 minus h power 1 by 3. Now change the proportionality sign to equal to sign. So equals k 9 minus h 1 by 3. We need a value of k because it should come out to be 0.1 as we can see from this given equation. So now to find k, we're going to use the perimeters given to us. T is 0, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ कहीं t नहीं है. H is 1 and dh/dt is 0.2. So 0.2 equals k 9 minus 1 power 1/3. 9 minus 1 हो गया 8. 8 का क्यूब रूट हो गया 2. So it's 0.2 upon 2 equals k, and k comes out to be 0.1. So dh/dt is equals to 0.1 9 minus h power 1/3. ओके, ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. गोइंग टू क्लियर पार्ट 1. Part 2 says solve this differential equation and obtain an expression for h in terms of t. So h should be made the subject. dh/dt equals 0.19 minus h power 1/3. Okay. So differential equation solve करने के लिए क्या करते हैं? एक साइड पे dh चाहिए होता है, एक साइड पे dt आना चाहिए. So we've sent dt to the other side. dh लेफ्ट साइड पे अगर, तो हमें h रिलेटेड टर्म सारी लेफ्ट साइड पे मूव करनी है. सो दैट्स गोइंग टू बी दिस. इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. सो इट्स गोइंग टू कम इन द डिनोमिनेटर 9 minus h power 1/3. Or 0.1 can stay here, or you may send it to the other side. I'm going to keep it with 0.1 dt. Once you have that, dh in one side, h, all of h terms on the same side, and dt terms or any t terms to the right hand side. Now we can solve the differential equation by integrating both sides. So we have integration of 1 upon 9 minus h. In fact, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, क्या waste करने जगह. This is going to be 1, and that's dh to the side. So up, how do I integrate this? ये कैसे integrate होगा? सबसे पहले you should check this कि ये रूल तो नहीं लग रहा कि डिनोमिनेटर में fx है. पावर रूल है. हाँ, ठीक है. न्यूमरेटर में f प्राइम x है, तो ये हो जाता है ln fx. बट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में नहीं है. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो वुड बी अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. 1/3 9 minus h पावर में हम -1 कर देते हैं, और टाइम्स 9 minus h की डेरिवेशन which is -1. So we don't have this in the numerator, so it's not the ln fx वाला case. So next thing we check is कि कहीं पावर रूल तो नहीं लग रहा. पावर रूल क्या होता है कि if you have fx power n in the numerator, so इसकी integration fx n plus 1 upon n plus 1 times f prime x जो हमने as में पढ़ा हुआ है. So it is exactly that. I'm going to write 9 minus h power 1/3 in the numerator.
तो इट बिकम्स -1/3 इन द पावर, और इसको मैं 0.1t, और एक साइड पे प्लस सी करना होता है, मैं इस साइड पे प्लस सी करी। ओके, अच्छा जी, अब लेट्स अप्लाई पावर रूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट्स गोइंग टू बी 9 माइनस एच पावर -1/3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी -1/3 प्लस 1, और times the derivative of 9 minus h, which is 0 minus 1, so just -1, and equals 0.1 t plus c. अब 9 minus h पावर में आ गया 2/3, और डिनोमिनेटर में आ गया 2/3 into -1, so -2/3, equals 0.1 t plus c. नेगेटिव 2/3 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो -3/2 बन जाएगा। सो -3/2, 9 माइनस एच 2/3 is equals to 0.1 t plus c. अब before we proceed forward to find h in terms of t, हमें पहले c find करना है, और c find करने के लिए you use these initial values. t0 है, h1 है, और let's substitute that. So -3/2, this would be 9 minus 1, 2/3 equals 0.1 times 0 plus c. तो इसको कैलकुलेटर में कर लो। 9 माइनस 1 8 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से डिनोमिनेटर कैंसिल होके 2 हो गया, और -6 आ रहा है। So the simplified equation is -3/2, 9 minus h 2/3 equals 0.1 t minus 6. Let me confirm यहाँ पर ठीक है फिर नहीं, ठीक है। All right. Next part would be to make h the subject, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है express h in terms of t. So I'm going to send both 2 and 3 to the other side. In fact, -2/3 to the other side. So it's going to be 9 minus h power 2/3, और यहाँ पे मैं -2/3 से मल्टीप्लाई करूँ 0.1 t minus 6 को. So 9 minus h power 2/3 equals -2 into 0.1 divided by 3 gives -1/15 t plus 4 हो गया. Okay. अब एज को सब्जेक्ट बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एज के ऊपर तो पावर है, 9 माइनस एज के ऊपर. हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दैट पावर? पावर को ना खत्म करने के लिए हम एक्चुअली उसकी रेसिप्रोकल पावर ऑन बोथ साइड्स लेते हैं. जैसे कि हमें स्क्वायर को खत्म करना, उसके लिए से हमने जब स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेते हैं. स्क्वायर रूट जो होता है वो हाफ होता है, तो हम एक्चुअली अगर हमारे पास आ रहा हो x² इक्वल्स टू लेट्स से 17, और हमने स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं. स्क्वायर रूट एक्चुअली पावर हाफ होती है, तो आप 2 की रेसिप्रोकल पावर ले रहे होते हैं. इसी तरह अगर आपके पास हो क्यूब रूट ऑफ x इक्वल 17, तो अब हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइड पे क्यूब कर रहे होते हैं. क्यूब क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो क्यूब रूट है वो 1/3 होता है. So this question is actually x power 1/3 is equals to 17. तो आप उसकी रेसिप्रोकल पावर्स दोनों साइड पे लेते होते हैं. तो कीपिंग दिस इन माइंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप?
पावर 2/3 है, पावर को हमने खत्म करना है ताकि हम माइनस एज को मूव अराउंड कर सके। तो you'll have to take reciprocal power on both side, which is 3/2. So यहाँ पे भी पावर 3/2 और ये इसकी भी पावर 3/2. So you get 9 minus h equals 3/2 in the power और -1/15t plus 4. अब हमने h को सब्जेक्ट बनाना है तो h को राइट पे ले जाते हैं और ब्रैकेट को लेफ्ट पे ले आते हैं, तो उससे पहले नेगेटिव साइन आ जाएगा। So -1/15t plus 4 ये आ रहा है। Once you make h the subject, let me check the answer. ठीक है बिल्कुल। Okay, that is part 2 where you had to make h the subject. ये हो गया। Part 3, find the maximum height of the tree and the time taken to reach this height after planting. Maximum height of the tree. कैसे find करेंगे maximum height? ये भी आप AS में कर चुके हो। मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि DH over DT should be equals to 0, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट 0 होता है, तो DH over DT is equals to 0. I think we already have the expression for DH over DT. हाँ, ये पार्ट 1 में हमने निकाला हुआ है DH over DT का एक्सप्रेशन। इसको इक्वल्स टू 0 कर देता। So 0.1 times 9 minus h 1/3 equals to 0. पावर 1/3 equals to 0. अब इसमें से हमने h की वैल्यू निकालनी है। So 9 minus h पावर 1/3 equals 0. ये क्यूब रूट है तो हमें पावर 3 on both sides लेनी होगी। So we get 9 minus h equals to 0. So h is coming out to be 9. So the maximum height of the tree is 9 meters. और साथ पूछा एंड द वैल्यू एंड द टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट। अब टाइम निकालना है, सो इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यू हैव द हाइट, यू हैव टू फाइंड टाइम, और तो हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है कनेक्टिंग टाइम एंड हाइट। वी एक्चुअली डू, इधर भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। इसमें ऑलमोस्ट टी सब्जेक्ट बना हुआ है, आपने बस दूसरी साइड पे 6 ऐड करना है और अपने आंसर को 0.1 से डिवाइड कर देना। सो टू यूज दिस इंस्टेड। हाइट 9 है, टाइम फाइंड कर। So let's use this. It's going to be -3/2. 9 minus 9, ये तो गलत आ रहा है, तो 0 हो रहा है। अच्छा मे भी ठीक आ जाए, लेट मी चेक। 2/3 equals 0.1 t minus 6. So this just becomes 0. तो यहाँ आ गया 6 equals 0.1 t, तो टाइम आ गया 60, which is correct. और टाइम इन ईयर्स है क्वेश्चन में, तो 60 years सही है। Okay. Calculate the time taken to reach half of the maximum height. तो maximum height है 9, half of maximum height होगी 4.5. Height max equals 9. So height, half of the maximum height would be 3.5.
तो अब हम इस येलो इक्वेशन में एच की जगह 3.5 डाल लेंगे और टी को सब्जेक्ट बना देंगे. सो यूजिंग द सेम इक्वेशन अगेन, -3/2, 9 minus 3.5 power 2/3 और equals 0.1 times t -6 से t को सब्जेक्ट बना लो. तो जो भी इसका आंसर आता है उसमें +6 करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे. That would give you 19.1 year. ओके, क्वेश्चन 6 मैप करा. अच्छा, बिफोर वी डू क्वेश्चन नंबर 6, मुझे बताओ कि सिंस let me not record this. Okay. The variable x and t are related by the differential equation e power 2t dx over dt equals cos square x, where t is greater than equals to 0. When t is equals to 0, x is equals to 0, which initial parameters given it. Solve the differential equation obtaining an expression for x in terms of t. Part 1. Differential equation को solve करना है. I'm going to write this first again. अब क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक साइड पे dx होना चाहिए, न्यूमरेटर में एक साइड पे dt होना चाहिए. So I've sent dt to the other side. dx की साइड पे x की टर्म्स होनी चाहिए, तो फिर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos square x. और e पावर 2t dt की साइड पे होना चाहिए, तो ये राइट साइड पे जाएगा और ये भी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/e पावर 2t. अब ये सेट हो गया, एक साइड पे dx आ गया है और उसकी x की टर्म्स उसी साइड पे आ गई है, और एक साइड पे dt आ गया और t की टर्म्स उस साइड पे आ गई है. नाउ वी रेडी टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट दिस. इसके ऊपर मैं 1 लिख रही हूँ और dx उसके साथ लिख रही हूँ. अब क्या करेंगे, अब इनकी क्या इंटीग्रेशन है, 1/cos square x और e पावर 2t की इन द डिनोमिनेटर. कैसे करेंगे इंटीग्रेट? Who can tell me? cos square x को हमें इंटीग्रेट करना आता है, बट तब आता है जब वो न्यूमरेटर में, जब डिनोमिनेटर में मैम cos. सेकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जैसे tan x बन जाएगा फिर ये. cos का रेसिप्रोकल ले लिया, cos को या ऊपर भेज दिया, इट बिकम्स secant square x. रेसिप्रोकल नहीं लिया, बस वी जस्ट चेंज इट. 1/cos होता है secant, ये हो गया secant square x equals, यहाँ पे I'm going to send e 2t in the numerator, so e minus 2t dt. ठीक है. अब secant square x की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, it's tan x. So एक tan x equals e minus 2t की भी इंटीग्रेशन होती है अगर e f x है and we're integrating that, तो वो e f x ही रहता है और डिनोमिनेटर में f x को हम डेरिवेट करते हैं. So we get e minus 2t upon -2
और एक साइड पे प्लस सी लिखना होता है, या लेफ्ट या राइट, मैं राइट पे लिख प्लस सी। अब बिफोर यू प्रोसीड सी की वैल्यू निकालनी होती है, सो वो जो इनिशियल वैल्यू we get tan 0 equals e power 0 upon minus 2 plus c. तो ये मेरे पास आ रहा है 0 equals minus half plus c, because anything power 0 is 1. So c आ गया half. So the equation is tan x equals negative half e power minus 2t plus half. Let me check. ठीक है, अब x को सब्जेक्ट बनाना है, so tan will have to go to the other side. Tan inverse bracket all of this minus half e power minus 2t plus half. ये आ गया. This is part 1. Part 2. State what happens to the value of x when t becomes very large. Okay, so x equals tan inverse minus half e minus 2t plus half. अब वो कह रहे कि जो t है ये this becomes very large, ये जो t है, तो what will happen to x? अगर हम इस t की वैल्यू बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो e पावर माइनस 2t पे क्या इफेक्ट आएगा, इस पे क्या इफेक्ट आएगा? पावर e की पावर नेगेटिव भी है और बहुत बड़ी भी है, तो व्हाट विल इट बिकम? e पावर 2t का ग्राफ मेरे ख्याल में ऐसे होता है, यूं करके, दिस वुड बी e पावर 2t, ये एक्सपोनेंशियल राइज होता है. लेकिन अगर e पावर माइनस 2t हो तो इस तरह का ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है. तो अब जैसे जैसे t बढ़ रहा है, तो नोटिस के ई पावर माइनस 2t की वैल्यू 0 के इक्वल होना शुरू हो जाती है, और वेरी 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 क्लोज टू 0. 0 तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि एक कर्व टच नहीं करती ग्राफ को. अगर आप अपने कैलकुलेटर में भी करो ई पावर एक बड़ी वैल्यू लिख दो, -1000 लिख दो, -2000 लिख दो, तो वो देखना कि वो आपको देगा 0.000000 समथिंग. सो इट ऑलमोस्ट बिकम्स इक्वल्स टू 0. सो जब t becomes large, या t approaches infinity, I think when, just let's write, when t increases, या becomes large, तो e पावर माइनस 2t है वो 0 के इक्वल हो जाती है, या it approaches 0. So you just get x equals tan inverse half. So x approaches tan inverse, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, बस हाफ रह गया. So when t becomes very large, x becomes equals to tan inverse half. So your wording should be, when t approaches infinity, or when t becomes very large, x approaches tan inverse half. इस arrow की जगह लिख दो approaches. Okay. Next part क्या है? Explain why x increases as t increases.
explain why x increases as t increases. इसका आंसर इसमें जो इक्वेशन गिवन है ना dx over dt, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रही हूँ. इट्स cos square x over e power 2t. दिस इज पार्ट 3. क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन why x increases as t increases. तो ये जो है राइट हैंड साइड ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि cos x जो है वो स्क्वायर हो रहा है और e पावर 2t तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि t पॉजिटिव है. सो e पावर 2 times a positive value is always going to be positive. So dx over dt is greater than 0. So that means अगर t increase हो रहा है तो x increase हो रहा है. Hence, as t increases, x increases. Because dx over dt is always positive for every value of x or every value of t. Okay, अगला question. A certain curve is such that its gradient at the point x comma y is proportional to xy. So its gradient at point x comma y is just dx over dy. So part 1 is dx over dy is proportional to xy. Dx over dy is equals to kxy. k हम पहले निकालेंगे, ये x और y की वैल्यू गिवन है. x is 1, y is 1 and gradient is 4. So dy over dx is, sorry, gradient dy by dx होता है, मैंने गलत लिखा हुआ है. It should be dy over dx, not dx over dy. Change in y over change in x होता है ना, y2 minus y1 over x2 minus x1. So dy by dx. So dy over dx की जगह हम लिखेंगे 4 equals k, x की जगह लिखेंगे 1, y की जगह लिखेंगे 2. So k comes out to be 2. So dy over dx equals 2 times xy. Part 2. State the gradient of the curve at -1, 2 and sketch that curve. Gradient of the curve at -1, 2. So dy over dx equals 2 times -1 times 2 हो गया -4. So इस पॉइंट पे ग्रेडियंट है -4 एंड स्केच द कर्व. स्केच करने को कहा है, इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव है ना -4 ये कहीं यूज होगा. So how do we sketch this curve? It's y equals, अच्छा मैंने कोई गड़बड़ की है क्योंकि did not read the question properly. Show that we get this. ये तो नहीं आया. 2 times xy आया था. Show that the equation of the curve is that. हाँ, equation of curve तो मैंने निकाली ही नहीं ना, तो dy I stopped at dy over dx. Okay, my bad. इसको जरा दोबारा part 1 पे जाना पड़ेगा.
अच्छा जी, ये आया था हमारे पास dx by dt is equals to 2xy, but the question said show that the equation of curve is this. अब इससे हमने equation of curve निकालनी है, ये जो हमारे पास dy over dx है। So इसका मतलब है हमने करनी है integration. Okay, so what we do, we will move dx to the other side, y की terms dy के साथ, so upon y I'm going to write 1 by y, और यहाँ पे है 2x. So now it's set. Now we integrate both sides. So 1 by y की integration होगी 1 upon fx, न्यूमरेटर में होना चाहिए f prime x. So then the integration is equals to ln fx. So हमारे पास denominator में है y, numerator में इसका derivative है 1. So this becomes equals to ln y equals to x की integration है x square upon 2. And you have to add plus c on any one of the sides. I'm adding it here. So we're getting ln y equals x square plus c. अब इससे आगे जाने से पहले we must find c first. So I'm going to use a given coordinate which is 1, 2. So ln 2 equals 1 square plus c. So c comes out to be ln 2 minus 1. मैं इसको चेक कर लूँ before proceeding. ठीक है. Okay. So the curve is ln y. The equation is ln y equals x square plus ln 2 minus 1. अब मैंने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए पहले दोनों ln टर्म सेम साइड पे आएंगी ताकि हम ln को दूसरी साइड पे भेज सके. So you get this ln y minus ln 2 equals x square minus 1. अब हम log का रूल यूज करेंगे कि ln a minus ln b is equals to ln a by b. So we're getting ln y by 2 equals x square minus 1. दोबारा log use करेंगे, ln has to go to the other side, it becomes e, and the other value on the right hand side goes in the power. We have y by 2. अब y equals 2ex square minus 1. ये आ गई equation. फिर था पार्ट 2 में स्टेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट -1, 2. सो ग्रेडियंट के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, dy over dx. So let me do that here. dy by dx equals 2 times x है -1 और y है 2. So we get dy over dx equals -4. स्केच करने को कहा हुआ है इस कर्व को. अब ये कोई टिपिकल शेप तो है ही नहीं जो हमें इसकी इंटीग्रेशन स्केचिंग आती हो. पावर में e की पावर में इट्स x स्क्वायर माइनस 1. सो अब इसको स्केच करने के लिए ना मैं गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ दिस के -4 है एक पॉइंट पे डेरिवेटिव, और वो पॉइंट क्या है -1, 2. और ऑल्सो वी नो दैट 1, 2 पे डेरिवेटिव इज 4. लेट मी जस्ट क्लियर द स्पेस. So we know that at point 1, 2 the gradient is 4, and at point -1, 2 इस curve का gradient is -4. So ये एक symmetrical सी curve है. अगर मैं इसको इस तरह से लगा कि 1, 2 इधर है
और -1, 2 इधर ऐसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। एक पे ग्रेडियंट नेगेटिव है -1, 2 पे, तो इस तरह का कोई फॉलिंग टेंजेंट बनेगा इस पे नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव बनेगा। ओके, व्हाट एल्स डू आई नो? अगर मैं y को 0 कर दूं तो व्हाट वैल्यू डू आई गेट? जब y 0 हो जाएगा तो व्हाट वुड दिस बी? सॉरी, y नहीं, x 0 हो जाएगा। व्हेन x इज 0 तो y क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 2e पावर 0 - 1। सो इट्स गोइंग टू बी 2/e। 2/e क्या होता है? 2/e इज 0.7। तो यहाँ कहीं 0.73, समवेयर ओवर है। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह की कोई कर्व बनेगी, यहाँ का फ्लैट होगी और यहाँ ये हो जाएगी। लेट मी कंफर्म। हाँ, ऐसी कर्व बनेगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि हमें कैसे पता चलेगा ऐसी शेप बनेगी क्वाड्रेटिक की तरह, पर फ्लैटर क्वाड्रेटिक, तो आप ना कैलकुलेटर में टेबल मेथड यूज कर सकते हो। कि आप कैलकुलेटर में लेट्स से -3 से 3 तक इसकी वैल्यूज सेट करो और स्टेप साइज 1 ले लो, तो आप देखोगे कि आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो सिमेट्रिकल आ रहे हैं एक्स और वाई से। जैसे यहाँ ये पॉइंट आ रहा है तो उसके पैरेलल +3 पे ये आ रहा है, फिर उसके साथ इस तरह के सिमेट्रिकल से पॉइंट्स आएंगे, तो उनको ज्वाइन करके यू स्टिल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। इस तरह